Let me quickly cut across to Anjana Om Kashyap, who's currently in Jahangirpuri, where the Delhi violence broke out. Let's take a listen. तभी ये पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और इस तरह के ईंट ऊपर से फेंके जा रहे थे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं, जो ऊपर से फेंके जा रहे थे। अब आरएएफ को भी वहाँ पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है, क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी और आरएएफ को यहाँ पर बुलाकर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कुछ सेकंड्स पहले की बात है, जब तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन उसके पहले जैसे ही एक महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्राइम ब्रांच बताया जा रहा है, क्राइम ब्रांच से वो महिला थी, उसके आने के बाद यहाँ पर बवाल हो गया। और फिर यहाँ पर जो पुलिस अफसर है वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और वो जांच करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आरएएफ को यहाँ पर बुला लिया गया है। जो महिलाएं थी आरएएफ की, उनको अंदर घुसाया गया है। यहाँ थोड़ा सा साइड, हम अंदर नहीं जा रहे, साइड हो जाए, हम नहीं जा रहे, आप चिंता ना करें। यहाँ से दिखाइए, ये बीच से दिखाइए। आरएएफ की तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी। आरएएफ की देखिए, महिलाएं अंदर घुसी हैं और अब उन घरों में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौबत ऐसी आ चुकी है और ये तो उस चौराहे से काफी दूर है, लगभग 100 मीटर दूर है जहाँ पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन जो साजिशकर्ता अलग अलग गलियों में जहांगीरपुरी में घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की फिराक में जब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है और लोगों को आगे ले जा रही है, तब इस तरह की नौबत यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद आरएएफ की तमाम महिलाओं को हेडगियर के साथ यहाँ पर बुलाया गया और वो फिर अंदर गई हैं और वो वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें समझाया जाए। दरअसल जांच में अगर किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लोग तनाव में आते हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देर का इंतजार और है और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है। एक बार जल्दी से अगर आपने वहां से भी तस्वीरें नजर आएंगी। अब तो यहाँ पर मीडिया का भारी हुजूम हो गया, उस वक्त जब हम आए थे तो नहीं था। ये देखिए, ये घर है, यहीं पर ये ऐसे घर हैं और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। मेन चौराहा दिखाइए, मेन चौराहा जहां पर उस दिन हिंसा हुई है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर जब एक महिला से पूछताछ की जा रही थी, उस महिला से पूछताछ करने के लिए जब उसे यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद महिलाओं का पूरा हुजूम बाहर सड़क तक निकलता है, पुलिस वालों पर हमला बोलता है। जब वो नहीं सुनते हैं, उसके बाद ऊपर छतों से पत्थरबाजी होती है और उसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। रिजर्व आर्म फोर्सेस की तमाम ऐसी जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने हेडगियर लगाया है और अब वो इस कॉलोनी में अंदर गई हैं लोगों को समझाने के लिए और किसी तरह से शांत करने के लिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की जो लोकल टीम है वो लगातार करना, लेकिन ये वो लोकेशन है जहां पर और जिसमें एक शख्स गोली चलाकर भाग जाता है, उसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद उसकी पहचान उसको डिटेन करके जो क्राइम आ चुकी है। Alright, here you have live visuals that we bring to you on India Today, where some of the women along the Jahangirpuri area who've been detained, in fact, many of their homes from the rooftops, we believe that stones were pelted at. Some women were also spotted there. Those women have been detained by the police special forces who are there, women officers who've now detained them and are questioning them as to what role they played in this entire clash. There you have it, live visuals coming in right here on India Today that we show you some of the women who've been called out of their homes, and they are now being investigated and interrogated by the police to find out what role they played. In fact, stone pelting was reported from many of their homes. Some women were also spotted during the clashes. While stone pelting was taking place, they were spotted there on top of those buildings. Those women have been called down by the police and are currently interrogated. They've in fact been detained as well. These are live images as we bring to you right from the riot hit area of Delhi's northwest.
Let me cut across to Anjana Om Kashyap, who's right there at the spot, bringing us all those details. तस्वीरें जरा दिखाइए इस तरफ से, यहाँ से आइए, यहाँ से दिखेंगी तस्वीरें जहाँ पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं, हेडगेयर उन्होंने पहनी हुई है और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इलाके में पुलिस की गाड़ी को लगा दिया जा रहा है ताकि इस कॉलोनी को अलग कर दिया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं अचानक ही सिचुएशन किस तरह की बनी और जिसकी वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर तैनाती की और महिलाओं को अंदर ले जाया गया है। महिलाओं को अंदर ले जाया गया है और महिलाएं अंदर फिर जो अपोज कर रही थी उनको रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है ताकि अंदर कोई भी जा ना सके और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। यह भारी तैनाती है इस वक्त पुलिस अफसरों की और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अभी भी दिखेगा जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए, रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर है वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेडगेयर के साथ यहाँ पर भेजा गया है और वो अभी भी अंदर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस हालात में ऐसी परिस्थितियां बनी और अभी भी समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अगर इस तरह से वोलेटाइल लोग होंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो उन्हें हर हाल में रोका जाएगा। ये तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जहांगीरपुरी का जहां पर पथराव हो गया था अचानक और ऊपर से घरों से लोगों ने पथरावबाजी शुरू कर दी थी। ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जहां उस दिन हिंसा हुई थी, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह जगह है और यहाँ पर अचानक एक महिला से पूछताछ की वजह से यह हिंसा की शुरुआत हुई। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो डंडे लेकर अंदर जा रहे हैं क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति को देखते हुए अचानक कोई भी परिस्थिति बिगड़े ना, इन सब के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम को देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी इतनी देर से हम लोग यहाँ पर पूरे जहांगीरपुरी इलाके में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सादी वर्दी में हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर एफएसएल की टीम हो, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं ऐसे ही हेडगेयर के साथ, कई महिलाएं अंदर भी गई हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बाहर सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं पुलिस की तरफ से, उनमें से कई सादी वर्दी में भी मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी तरह की हिंसा की आशंका हो तो कम से कम फौरन उनसे जानकारी ली जा सके और बातचीत करें ताकि वो लोगों से बात कर सके इस पूरे इलाके में। तो ये यहाँ की परिस्थिति है। लगभग आधा घंटा हो गया उस घटना को। एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे चलकर अगर पूरी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाएं, 100 मीटर दूर है ये मेन चौराहे से और ये पूरा ऊपर का इलाका दिखाते हुए जहांगीरपुरी का ही है। भारी आप कह सकते हैं सकरी हुई गलियां हैं, भारी भीड़ और ऐसा इलाका है और यहीं पर ये वाले गेट के ठीक सामने यहाँ पर अचानक 50 से 100 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और वो 100 महिलाएं पुलिस से भिड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर से किसी को आप पूछताछ के लिए नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब पुलिस कहती है कि क्राइम ब्रांच का काम है, वो अपना काम कर रही है, उसके बाद वो गुस्सा दिखाने लगती हैं। मीडिया को देखते ही, हमें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। वो चाह रही थी कि पूरा मीडिया में कवर हो और उसके बाद इन्हीं घरों से, जहां से आप ये लाइव देख रहे हैं, इन्हीं ऊपर के घरों से पत्थरबाजी की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये आज आप समझ सकते हैं एक बार फिर से हल्की फुल्की बहुत, चूंकि जो आरएएफ की महिलाएं थी, दिखाइए जरा ऊपर से कैमरा दिखाइए, वो आरएएफ की महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही हैं, ये दिखाइए ऊपर से उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी और अब ये लोग वहां से निकल रही हैं। आरएएफ की एक पूरी ह्यूमन चेन बना दी गई है, ये दिखाइए, ये महिलाएं निकल गई हैं और ये आरएएफ की एक पूरी टीम है जिसने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया है। ये दिखाइए, ये ह्यूमन चेन है,
ये ह्यूमन चेन इन्होंने यहाँ पर बना लिया है ताकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और मामले को ठंडे पड़ने दिया जाए, ताकि कुछ देर तक यहाँ पर शांति बनी रहे। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए, और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, लाइव कवरेज। आज हिंसा के, आप कह सकते हैं शनिवार को ये हिंसा हुई थी, उसके बाद सोमवार को आज छिटपुट तरीके से एक कॉलोनी में फिर से बवाल मचता है, और बवाल के बाद जो ये तस्वीरें हैं वो बता रही हैं पूरी कहानी कि क्या यहाँ पर हुआ था। कुछ महिलाओं ने पहले विरोध की शुरुआत की थी और उसके फौरन बाद जब महिलाओं का विरोध खत्म किया गया, कुछ आरएएफ की महिलाएं आई थी, उन्होंने वहां पर लोगों को समझाया, और उसके बाद से वहां पर समझाने के बाद आर्म्ड हेडगेयर के बाद वहां से महिलाएं निकली हैं। अब break which was. And there you have it. India Today reporters on ground bringing us the latest from that spot where the police are currently in abundance, trying to investigate what exactly happened, who instigated the clash. And of course, stone pelting is being closely investigated upon on those women as well who allegedly were belonging to those areas where stones were pelted at the procession. Many of them have been called down for interrogation. Ashutosh also right there at the spot. Ashutosh, give us an understanding. Why are women there who have in fact been called out of their homes, been detained? Okay, so it all started with the crime branch investigation. Since last night, multiple young boys, the local men, have been apprehended by the crime branch who is investigating the case. And that was the case even this morning. More than 8 to 9 people have been apprehended who are allegedly named by crime branch for this rioting that happened on Saturday. So clearly, you know, in multiple these gullies, these corners, since these all houses are located in extremely remote areas, and hunting down when they were knocking door to door and clearly arresting those accused who are named in the crime branch, then these women, at least particularly in this, they just came out resisting any action by the crime branch, and loudly they were saying that we will not allow arrest of any local boys from our area. So that was the one reason, well, that led to a minor scuffle between the local women and the police, the crime branch officials, and then the police called up the CRP women and also the rapid action forces, the riot, this team. So they somehow, controlled over the now situations, because this action which is taking place for quite long since morning, and we have seen many boys who have been named in the FIR by the Delhi police have been apprehended, have been arrested. So clearly the women were resisting the arrest and detention by the crime branch, and that led to the scuffle between the police and the local women here. You know, we saw a bunch of the local women there who came out arguing with the police there, but what is their grouse? Are they worried that the police would detain them with no fault of theirs, or is it that they're guilty and they know that there is a crime that's been committed and they want to protect their children no matter what? You can see this is a particular. Ashutosh, if you can hear me. Yes, Nabila, can you repeat your question? What I asked was the women that we see who have come out in large numbers to protest and argue with the police, what is their grouse? What are they worried about? Why are they not allowing for investigation to carry on as planned? Well, the heated argument that broke out between the protesters and the police, largely they're saying that they're saying that our boys are innocent, and it is the police which is detaining them, arresting them for without reason, without their involvement. So that is one reason, primarily that, and even several accused that we have seen since morning have been arrested, have been resisting their detention. They have been saying that the police is targeting only one side, that is the Muslim side. They've been accusing that there is one side being
targeted. There is one side being targeted constantly by everyone, including the police, and subsequently who are the other side, who was the provocative element, is not being even touched upon. And that is where somewhere there was anger, massive anger amongst this community, be it the men or the women. And since this morning, when all these nukkar, if you see even at this side particularly, when since morning... People, clearly their movement outside is totally restricted. And if you see the shop, what is really something to see here, that besides the barricade at the side, all shops are open, all movements are clearly open for everyone. But here this side, all these main gates that connecting to these, remote parts of Jahangirpuri is totally where the movement is restricted. Not even shops are open at the moment. So this was the crime branch team, special team, forensic team were carrying out their exercises, and crime branch team moved out making arrests of the accused, because so far there have been more than 25 arrests. And clearly this is not going to stop at 25. Clearly there will be more. And this hunt down was being carried out by crime branch. The women came out saying that it is not justified, and they are also arresting to the boys who were not even involved in the riot. And citing those reasons, they came in the confrontation with the police, and then police had to call the CRPF, they had to call the Rapid Action Force, and now they controlled over the situation. Clearly, everything now going to be calm. Right. Ashutosh, we hear the allegations coming in from the people in the locality that just people of the Muslim community have been targeted, they have been arrested. Give us an understanding. What's the reality? Out of the 21 people who've been arrested who've been accused of this riot situation, do they all belong to one particular community only? Well, so far there is only one information that we know, that yes, so far the arrests have been made is only from the one community. That is the major accusation. However, until the police releases the list of the names those have been arrested, those have been shown arrest, you cannot really say. For now, it remains an accusation by the community that only their community is being targeted. But since yesterday, largely accusation comes that even in the FIR, the police continue to say more than 3 times that procession was peaceful. However, the accusation is that it was provocative, that triggered the clashes. So clearly, besides the accusation, the police already in the FIR said it was peaceful procession. That itself gives up a clean sheet to the other side, and clearly it also narrates how the investigation gonna be carried out further. But here, amidst of all the accusation, whether have to see whether police also going to investigate on the other accusations, whether they're gonna also investigate on those videos surfaced where the people in the procession were seen carrying arsenal, including pistols, and until those things come, they name people, they arrest people. Clearly, those questions will be continued to ask even by the locals, and that should be asked. But here, what has happened when the police carrying out its investigation, carrying out its arrest, which is the legal process, which is the legal and domain of the Delhi police, when the women are opposing it, restricting it, that led to the confrontation. But for now, the situation has been controlled over. The police is carrying out. In fact, the media has been asked to vacate that particular stretch because the police is continuing to making all the arrest and detention. And in the meanwhile, the forensic team we have since morning visiting one after another places where could be potentially some evidence related to what had happened on Saturday. Nabila. No, undoubtedly, the police and the forensic teams must be allowed to investigate. This is their duty, and they've got to do it as per how they've planned it. But the question here arises is what really prompted the clashes? Ashutosh, has the police managed to get to the bottom of it? Because you did mention there were allegations of the protest march being provocative or trying to instigate some kind of violence. We also saw visuals of many of those people who were part of the protest, who were part of the procession, carrying swords. What was the reason for people to carry swords along that procession, the religious procession? Well, eventually the outfits those carried out that procession is not clarifying anything and not coming out clean that what was the reason to carry out arsenal in a profession. Secondly, there is neither a word from Delhi police that did they allow procession legally to carry out the arsenal. Was there no vigil on that? And if there was approval,
capital, why there was no adequate arrangement of the security to avoid or to prevent any such scuffle which could potentially take place, in the light that it had already happened just a couple of days ago in several other states. So clearly, the onus is on the Delhi police that they could have easily prevented what had happened in the national capital on Saturday. But for now, since it's already happened, the incident, the probe has to be done by the Delhi police, and this is some process is underway. But even before the probe could start, from the FIR to the investigation process, the police itself is now being under question. And hence, since the detention is now being made here, already one scuffle took place. This is just third day of what had happened on Saturday. It's Monday, and we are seeing already the confrontation between the locals, particularly the women who came out in the defense of the local youth are being arrested or being named in the FIR. We have seen yesterday when several people were arrested, the women and also their family members, they gathered outside the Jahangirpuri, the local police station, which was where the case was being investigated. And now, since the case has been handed over to the crime branch, this situation could may trigger further. But however, situation remains calm. This was a minor confrontation between, the police, which was, of course, the CRP was called in, but now it has been totally doused in, and the investigation process continues. Nabila. While the question arises, like you rightly said, Ashutosh, we see bouts of violence of similar nature, very similar nature across the country that took place in several states during religious processions that were being carried out in Muslim-dominated areas. We saw similar communal clashes that unfolded into violent scenes. While we see the sensitive and charged environment, wasn't it not the responsibility of the Delhi police to ensure adequate deployment along those routes, despite knowing that this could very well turn into a riot-like situation owing to what happened in 2020 in northeast Delhi? Clearly, the police were not alert enough, were not in their best presence. Is there a justification that the police has given to that? Why post-mortem reaction the police has now come out with instead of actually preventive measures? Well, at the moment, the first priority is to control the situation, which has been controlled. You only see the CRP women, the team, the platoon which is called into control over, because it was only a verbal scuffle that led to primarily. Nothing major happened. Somehow the police was called in on time, so they prevented any untoward incident. But yes, those questions are continuing to be even at the Delhi police end, whether they're going to clarify, they're going to answer on the charges that are being asked about, being questioned, particularly the fair probe is concerned by Delhi police. But for now, situation remains calm. Of course, it was a late confrontation that happened, and now what we're seeing is the Delhi police, according by CRP, is asking media personnel, appealing everyone to go beyond the barricade side, because this is where the investigation continues. Now, what I see also is here that I already mentioned that besides the barricade, everything is over. There is no restrictions on the people. But here at this side particularly, all these gates, if you see, are totally locked, being guarded by the CRP, the Rapid Action Force. Personnel, the RAF has been deployed here, and that's where people complaining. The other side, where also there was scuffle, everything remains open. They have, access to everything. Why the other side has been blocked, where even the local shops are not open, and they are being deprived from the basic services that they would require personally. While local police said that we're not stopping anyone. If someone wants to go out, they can go. They can use the other gate. They can go out and buy things required for their household. But here, the situation is now, of course, taking another turn when the number, and now they're defending all these accused, those who are named in the FIR, women are defending clearly at the front, and that led to the scuffle. And since the investigation process is still underway, and what is more likely that there will be more arrests soon, we'll have to see how it's going to unfold further here in Jahangirpuri. Nabila. Well, let's just hope, Ashutosh, that this investigation is fair and gets to the bottom of what really led to the clashes. Those involved must be arrested. Those resisting this investigation must be detained. And that's what we see here in Jahangirpuri as the police now try to investigate as to who is behind the stone pelting, where were the stones stored in the first place, how do these people access stones, arms, ammunition to keep in their homes, how did they manage to hoard it, where did they access it from, all those details that the police is now trying to investigate in those areas which is Muslim dominated have been met with stiff resistance. India Today, of course, continues its relentless coverage.